So, good afternoon, my dear students. So, yesterday we have done the temporal fossa and the infratemporal fossa. You have seen the temporal fossa is located on the side of your head. Infratemporal fossa is located below the temporal fossa. So we have done the contents of some of the contents of the temporal and the infratemporal fossa. In the temporal fossa, you can see this big muscle which is known as temporalis. In the infratemporal fossa, you have seen the lateral pterygoid muscle, this conical muscle, this is lateral pterygoid muscle. Then you also see the medial pterygoid muscle. Then more laterally on the outer aspect, you can see a muscle which is known as masseter. So you have come across, these are the four muscles of mastication which helps in movement of the mandible and helps in chewing and speech. So these are muscles of mastication, four muscles of mastication. Now, what are the other contents of the infratemporal fossa? Now, one important, very important content of infratemporal fossa is the maxillary artery. So maxillary artery, so see, just memorize this picture. ये तुम्हारी ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी की ये पिक्चर जो है ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, तब ये अपने आप तुमको इसका कोर्स, ओरिजिन, फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस सब याद हो जाएगा इफ यू रिमेंबर दिस पिक्चर. ठीक है, तो फ्रॉम द लैटरल साइड यू आर लुकिंग एट द स्कल फ्रॉम द लैटरल साइड. दिस इज द एक्सटर्नल अकोस्टिक मियटस, जहाँ पे हमारी ऑरिकल या पिन्ना अटैच रहती है. उसके ठीक आगे यहाँ पे मैंडिबल का हेड अटैच होता है, फॉर्मिंग द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. फिर दिस इज द कट पार्ट ऑफ मैंडिबल, यहाँ से मैंडिबल हटाया गया है ताकि हम इस मैक्सिलरी आर्टरी को एक्सपोज कर सकें. मैक्सिलरी आर्टरी को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिमूव a part of the mandible, then we can see the course of the maxillary artery. So what is the maxillary artery? So maxillary artery is one of the terminal branches of external carotid artery. So this is the external carotid artery. इसकी दो branches है. So this is the maxillary artery and the another one running vertically upwards towards the temporal region, that is the superficial temporal artery. So maxillary artery has got external carotid artery has got two terminal branches. One is the maxillary artery and the other one running vertically upwards is the superficial temporal artery. So maxillary artery is a branch of one of the terminal branches of the external carotid artery. ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ऊपर जाते हुए सीधा, this is the superficial temporal artery. दूसरी terminal branch है maxillary artery. So today we will discuss the maxillary artery. So maxillary artery is a very important artery. It is one of the terminal branches of external carotid artery. Then it is also known as, इसका दूसरा नाम क्या है? Internal maxillary artery. It originates within the parotid gland. देखो यहाँ पे see this green line. So this indicates the shadow of the parotid gland. So it is originating within the parotid gland. कहाँ पे originate हो रहा है? This is the neck of mandible, behind the neck of the mandible. So it is originating within the substance of parotid gland, where just behind the neck of the mandible. Then you will see in its course that it is divided into three parts by the lateral pterygoid muscle. So for that you need to remember this picture. ये आर्टरी सीधी सीधी ऐसे आगे की तरफ जा रही है, इट इज रनिंग फॉरवर्ड्स. सो इसके कोर्स में ये तीन हिस्से में बढ़ गई, कौन सी मसल से? बाय द लैटरल pterygoid muscle. So lateral pterygoid muscle divides the maxillary artery into three parts, which you will know later on. ठीक है, तो origin from the external carotid artery, कहाँ पे? Site behind the neck of the mandible.
ऑल्सो इट इज नोन एज इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि अंदर की स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है आपका शुरुआत जो एग्जाम में लिखने का पैटर्न है। ओरिजिन, साइट, कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सी जगह से, बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल। डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस किस जगह को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये ईयर के पास है तो एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और ऑडिटरी ट्यूब। फिर इसकी कुछ ब्रांचेस ड्यूरा मैटर को सप्लाई करेगा। फिर यू विल सी लेटर ऑन इट इज सप्लाइंग द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ टीथ, टीथ को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। देन मसल्स ऑफ द टेम्पोरल, टेम्पोरल एंड द इंफ्राटेम्पोरल रीजन, जो हमने पढ़े हैं मसल्स, उनको कौन सप्लाई कर रहा है, मैक्सिलरी आर्टरी। फिर नोज एंड पैरानेजल एयर साइनसेस, पैलेट, हार्ड पैलेट है यहाँ पे, पैलेट, पैलेट को सप्लाई कर रहा है। देन रूट ऑफ फेरिंग्स, तो ये सारे इसके डिस्ट्रीब्यूशन है maxillary artery के, clear। Then what is the course of the artery? So in the first part, तीन parts है उसके, first part, second part and third part. So first part runs horizontally between the neck of the mandible and the sphenomandibular ligament, and then along the lower border of lateral pterygoid. अब इसके लिए आपको पिक्चर आना चाहिए, just look at this picture, ये देखो। सो यहाँ पे ये लैटरल टेरिगोइड मसल यहाँ पे टेरिगोइड प्लेट पे था, ठीक है। यू हैव, वी हैव रिमूव द लैटरल टेरिगोइड, द लैटरल टेरिगोइड इज एब्सेंट आउट हियर, हटा दिया गया है। तो पहले तो हमने मैंडिबल को यहाँ से हटाया ताकि हम मैक्सिलरी आर्टरी कोर्स विजुअलाइज करें। तो कैसे जा रहा है ये, तो यहाँ पे नेक ऑफ मैंडिबल था। सो फर्स्ट इट इज रनिंग फॉरवर्ड बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड this ligament is known as the sphenomandibular ligament. So it is running forward horizontally in the first part. ये शुरुआती part है, so this is the first part. So it is running between the neck of the mandible and the sphenomandibular ligament. Then see this picture कैसे जा रहा है। So this is the first part, neck of the mandible और ligament के बीच में। Then it runs along the lower border of the lateral pterygoid. ये lateral pterygoid muscle की lower border है. It runs along the lower border of the lateral pterygoid muscle. ठीक है, ये पिक्चर आपको याद रखना है। Along the lower border of lateral pterygoid muscle. Second part किसको बोलते हैं? Runs upward forward, superficial to the lower head of lateral pterygoid. So see, this is the second part of the artery. ये जो artery की ये lower head है, this is the lower head of lateral pterygoid, this one is the upper head of lateral pterygoid. So second part is running upward forward along the or superficial to the lower head of lateral pterygoid muscle. इसकी ठीक ऊपर लोअर हेड ऑफ लैटरल टेरिगोइड मसल के ऊपर ये रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखो, सो दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट, this one is the second part. Then third part, it comes to lie between the upper head and the lower head of the lateral pterygoid, यानी कि ये जो हिस्सा है, this is the third part of maxillary artery. So passes between the two heads of lateral pterygoid muscle. Then it passes through the pterygomaxillary fissure and it enters the pterygopalatine fossa. So where it lies in front of the pterygopalatine ganglion and divides into its terminal branches. So this is in short and very simple language the course of the maxillary artery, the three parts, first part, second part and third part. Just revise this picture once more, how it is beginning. It is beginning behind the neck of the mandible. Then first part, this is the first part which is running between the neck of the mandible and the sphenomandibular ligament, and it runs along the lower border of lateral pterygoid muscle. Second part runs forward and horizon upwards along the lower head of lateral pterygoid muscle or superficial to the lower head of lateral pterygoid muscle. Third part, you can see it comes between the two heads, that is the upper head and the lower head, and then it turns medially and
enters into the pterygopalatine fossa, अंदर की तरफ घुस जाएगा, कहाँ, टेरिगोपालेटाइन फोसा में चला जाएगा, कि by which fissure, through the pterygomaxillary fissure. तो ये मुड़ के ये अंदर की तरफ घुस गया, ठीक है. The artery turns medially and it enters the pterygopalatine fossa through the pterygomaxillary fissure where it divides into its terminal branches. ठीक है. So this is in short the course. So हर एक कोर्स पार्ट की कोर्स दिया हुआ है. तो फर्स्ट पार्ट इज बिटवीन द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड द लैटरल टेरिगोइड मसल और स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. This is related. First part is related above. What is this nerve? This nerve is known as the auriculotemporal nerve. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑरिकल है, ऑरिकल को सप्लाई कर रहा है, और ये हमारा टेम्पोरल रीजन है. तो ये जो नर्व ऊपर चढ़ के जा रही है, दिस इज नोन एज द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, which is a branch of mandibular nerve. So the first part is related above with the auriculotemporal nerve. और इसकी जो ब्रांचेस है फर्स्ट पार्ट की, ये अकम्पनी करेगी ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व को. क्लियर अबाउट द कोर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट. Then, what are the branches of the first part of maxillary artery? Frequently asked in the exam. ठीक है. तो I just remember the formula क्योंकि हम भूल जाते हैं. As आदमी, accessory meningeal artery, anterior tympanic artery, deep auricular artery, middle meningeal artery and inferior alveolar artery. ADAMI आदमी मतलब, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, ये फर्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी गिव्स 5 ब्रांचेस. A for accessory meningeal artery, D for deep auricular artery, A for again anterior tympanic artery, M for middle meningeal artery, and I is for inferior alveolar artery. So these are the branches of the first part of the maxillary artery. तो ये दिखाया जा रहा है according to the number. तो सबसे पहले वाला ब्रांच जो है, दिस इज द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. ये दिख रहा है आपको, इसका नाम है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. मतलब ये देखो, स्कल, बेस ऑफ द स्कल से ये क्रैनियल कैविटी के अंदर घुस रहा है. कौन सी फोरामेन से? So this foramen is known as foramen spinosum. So through foramen spinosum, the middle meningeal artery is entering into the cranial cavity. So cranial cavity के अंदर घुस के ये क्या कर रहा है? इसका नाम है meningeal artery. So it will supply the meninges of the brain, mainly in the middle cranial fossa. समझ में आया? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, इट इज सप्लाइंग द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, मेनली द ड्यूरा मैटर ऑफ द मिडिल क्रेनियल फोसा. ठीक है. सो इट एंटर्स द क्रेनियल कैविटी थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम. फिर आपको दिख रहा होगा, when it is entering or when it is running upwards vertically, it is surrounded by 2 roots. ये रूट दिख रहा है, एक ये रूट, एक ये रूट. It is surrounded by the 2 roots of, see this nerve, this is the auriculotemporal nerve, very important nerve. So while this artery is running upwards vertically towards the foramen spinosum, it is surrounded by the 2 roots of the auriculotemporal nerve. So auriculotemporal nerve, this nerve, you know what is this nerve? This is the mandibular nerve. So auriculotemporal nerve is a branch of the mandibular nerve, which is a division of the 5th cranial nerve. यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व की एक डिवीजन है. कौन सी डिवीजन है? मैंडिबुलर डिवीजन. तो उस मैंडिबुलर डिवीजन की एक ब्रांच है जिसका नाम है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. तो ये ऑरिकल और टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है, एज वेल एज हमारी पैरोटिक ग्लैंड को सप्लाई करती है, सिक्रीटोमोटर फाइबर्स देती है. तो आई एम डेविएटिंग अवे फ्रॉम माय टॉपिक. सो मैं क्या कहना चाहती हूँ, सी द रूट्स ऑफ द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व सराउंडिंग द
middle meningeal artery in the infratemporal fossa. Very, very important. Then another branch of this maxillary, first part of maxillary artery is accessory meningeal artery. So this artery, this is accessory meningeal artery. So this is entering the cranial cavity through the foramen ovale. So it is also supplying the meninges of the brain. So it is entering the cranial cavity through foramen ovale. Then you have the third branch which is known as the anterior tympanic branch. ये देखो कैसे ऊपर जा रहा है. So this one is the anterior tympanic branch which is entering into the middle ear cavity through the petrotympanic fissure. ये दिख रहा है, ये जो बीच का स्पेस या फिशर दिख रहा है, इसका नाम है petrotympanic fissure, and then it will supply part of the auditory tube and the inner aspect of the tympanic membrane, anterior tympanic branch. Then fourth one is deep auricular artery. This one is the fourth branch shown in this diagram. So this is deep auricular artery which will supply the external acoustic meatus, the tympanic cavity or the middle ear cavity and the tympanic membrane, जिसका नाम ही है डीप ऑरिकुलर ब्रांच. ऑरिकल यानी कि ये कान, तो कान से रिलेटेड इट विल सप्लाई द एक्सटर्नल ईयर and the middle ear and the tympanic membrane. Fifth branch, see this fifth branch, inferior alveolar artery. See, this is running downwards. So fifth branch is the inferior alveolar artery. So as the name implies, it will supply the alveolus or the teeth. So it will supply the teeth. So let me show you. So this is about the middle meningeal artery in details which I have told you. So this is middle meningeal artery is the largest of the meningeal vessel and supply the dura mater, the bone and related bone marrow of the cranial cavity walls. Then inferior alveolar artery मैं दिखाना चाहती हूँ. This picture is showing the inferior alveolar artery. So it enters, so it runs downward vertically. Then it enters into the mandibular foramen. It enters the mandibular foramen on the inner aspect of the ramus of the mandibular foramen. Then it runs forward in the mandibular canal. इसी बोन के अंदर एक कैनाल है जो जिसका नाम है mandibular canal. So it runs forward and downward in the mandibular canal with the inferior alveolar nerve. यहाँ नहीं दिखाया गया है, तो आर्टरी और नर्व एक साथ में रन करेगी किसके अंदर, मैंडिबुलर कैनाल के अंदर. So this artery is the inferior alveolar artery and it is distributed with the inferior alveolar nerve and supplies all the lower teeth. देखो ये lower teeth को supply कर रहा है. और then it emerges at the chin or at the anterior aspect of the body of the mandible through the mental foramen as mental nerve. ठीक है, and supplies the skin of the chin. Now before entering the mandible, the inferior alveolar artery gives a small branch. foramen में enter करने से पहले इसने एक छोटी सी branch दिया जिसका नाम है mylohyoid branch which supplies the mylohyoid muscle. Clear? तो इसने एक mylohyoid branch दिया inferior alveolar artery ने. फिर इसने mental artery, इसकी टर्मिनल ब्रांच है मेंटल आर्टरी जो बोन से बाहर निकलेगी थ्रू द मेंटल फोरामेन इन द मैंडिबल. सो कौन से फोरामेन से रन कर रहा है ये, थ्रू द, इट इज एंटरिंग द मैंडिबल through the mandibular foramen and it is running forward in the mandibular canal where it is dividing into small branches to supply the root of the teeth of lower jaw. Then what are the branches from the second part? So mainly the branches from the second part are muscular branches which is supplying the
which is supplying the muscles of mastication, that is the muscles in the infratemporal fossa. So four muscular branches. So two deep temporal arteries. So see this deep temporal arteries which is given off. So this is the second part which is crossing the lower head of lateral pterygoid muscle. So these are the two deep temporal arteries which is entering the temporal fossa, and it is entering deep to the temporalis muscle, and it is supplying the temporalis muscle. Then it is also giving the pterygoid branch which is supplying the lateral pterygoid muscle. Sorry. So you can see out here. So it is giving a pterygoid branch which is supplying the lateral pterygoid muscle. Clear? Then it is also giving another pterygoid branch which is supplying the medial pterygoid muscle. So one pterygoid branch is supplying the lateral pterygoid muscle. Another pterygoid branch is supplying the medial pterygoid muscle. Then it is giving mesenteric artery, which will supply the masseter, and one buccal artery, which will supply the buccinator muscle. Will run forward and it will supply the buccinator muscle. So, and mucous membrane of the cheek. So these are the four muscular branches: two deep temporal arteries, then pterygoid branches which are supplying the medial pterygoid and the lateral pterygoid muscle, mesenteric artery which will supply the masseter muscle, then a buccal artery which will supply the buccinator. So the muscular branches are supplying the muscles of mastication. So muscular branches are arising from the second part of maxillary artery. This is another picture which is showing the second group of branches or branches from the second part of maxillary artery. यहाँ पे हमको लैटरल टेरिगॉइड रिमूव करके हमने दिखाया गया है. सो ये देखो टेम्पोरल रीजन की तरफ ऊपर जा रहा है, ये दो डीप टेम्पोरल आर्टरीज. फिर देन उसके बाद आता है, दिस इज द टेरिगॉइड आर्टरी, दिस इज lateral pterygoid artery और नीचे की तरफ जाएगा जो medial pterygoid artery. Then this one is the buccal artery, and one you have the mesenteric artery which will run downward and it will supply the masseter muscle. Clear? So these are the branches from the second part of the maxillary artery. Then third group of branches of maxillary artery. So third part of maxillary artery, see, it is giving 6 branches. So you need to remember the 6 branches of maxillary artery from the third part. So first branch that it is giving is the infraorbital artery. So this is the infraorbital artery. Second one is the posterior superior alveolar artery. Third one is the greater palatine artery. See this greater palatine artery running in the greater palatine canal, and then it is emerging through the greater palatine foramen on the posterolateral aspect of the palate. Then fourth one is the pharyngeal artery, which will supply the pharynx, a very small branch. Fifth is the spinopalatine artery, which will enter into the nose, and it will supply the nasal septum and the lateral wall of the nose. Lateral wall, ये दो lateral wall है, इनको supply करेगा और nasal septum को supply करेगा. Sphenopalatine artery. Then last one is the artery of pterygoid canal, which will pass through the canal of the same name, that is, it will pass through the pterygoid canal and it will supply the sphenoidal air sinus. Now coming to each branch of the third part, the main important branch, देखो ये, so this is the third part of maxillary artery. So you can see the first branch. This is the infraorbital artery. So this is the orbit. ये जो है ये orbit है. उसके नीचे ये जो दिख रहा है cavity, ये maxillary sinus है. यानी कि हम साइड से देख रहे हैं, ऊपर orbit दिख रहा है,
नीचे ये मैक्सिलरी साइनस दिख रहा है, ये एयर फिल्ड बोन मैक्सिलरी साइनस है. सो यू आर सीइंग द ऑर्बिट एंड बिलो इट यू आर सीइंग द मैक्सिलरी साइनस. उसके नीचे टीथ ऑफ द अपर जॉ. यही चीज हम साइड से देख रहे हैं. सो दिस इज द ऑर्बिट. तो ये है ऑर्बिट का फ्लोर. सो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, infraorbital artery is one of the branches of the third part of maxillary artery. So it enters through the infraorbital foramen and then it runs through the infraorbital groove and then infraorbital canal and then it uh, emerges on the face through the infraorbital foramen. तो ये पहले इंफ्राऑर्बिटल groove से run करेगा forward. It will run forward through the infraorbital groove and then infraorbital canal and then it will emerge on the face just below the lower margin of the orbit. Orbit के lower margin में ठीक नीचे यहाँ पे infraorbital foramen है, तो वहाँ से ये बाहर आ जाएगा, the infraorbital artery. So then, so while it is running like this forward, it will give the anterior superior alveolar artery and the middle superior alveolar artery. तो ये हो गया तुम्हारा anterior superior alveolar artery और ये है middle superior alveolar artery. Clear? So ये सब टीथ को सप्लाई करेगा. एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो है ये इंसाइजर टीथ और कैनाइन टीथ को सप्लाई करेगा. मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी along with posterior superior alveolar artery will supply the premolar tooth and the molar tooth. So you can see that anterior superior alveolar artery and middle superior alveolar artery are branches of the infraorbital artery. Clear? Then another branch coming from the third part of maxillary artery, just before it enters the pterygopalatine fossa, it gives off the posterior superior alveolar artery which pierces the posterior surface of the body of maxilla and then it runs forward to supply the molar teeth and the premolar teeth. Molar और premolar को supply करेगा. कौन सी artery? The posterior superior alveolar artery. Also it will supply the maxillary sinus. So this is given off before the artery enters into, third part enters into the pterygopalatine fossa through the pterygomaxillary fissure. Then you can see another artery running medially. So this is the sphenopalatine artery which will supply the nasal cavity. So this one is another artery which is running downwards vertically. So this has to be the greater palatine artery which will run in the greater palatine canal and it will supply the palate. तो ये हो गए तुम्हारे थर्ड पार्ट. फेरिंजियल आर्टरी ये फेरिंग्स के वॉल को सप्लाई करेगा. फिर तो ये सारे 6 आर्टरीज आपको याद रखने हैं किसके थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस हैं. दैट इज द infraorbital artery. This is the infraorbital artery. This is sphenopalatine artery. Then you have the posterior superior alveolar artery जो maxilla की posterior surface को pierce कर रही है. फिर ये maxillary sinus को supply करेगी और teeth को supply करेगी. Then this one is the greater palatine artery. Then this one is artery of pterygoid canal and this one is the pharyngeal artery. So इतने सारे branches हैं इस पूरी maxillary artery के. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है, एक टर्मिनल ब्रांच है और ये आर्टरी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. किसके वजह से? एक मसल की वजह से. कौन सा मसल है? दैट इज द की मसल ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल रीजन, दैट इज द लैटरल टेरिगॉइड मसल. तो लैटरल टेरिगॉइड मसल इस टेरिगॉइड प्लेट से अटैच रहती है और ये नेक ऑफ मैंडिबल तक जाती है. तो उस मसल की वजह से 3 पार्ट्स हो जाती है. एक दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो लोअर बॉर्डर ऑफ लैटरल टेरिगॉइड के अलोंग रन करती है. दिस इज द सेकंड पार्ट which is crossing the lower head of lateral pterygoid and this is the third part which is
running between the two heads, and then it is entering through the pterygomaxillary fissure. ये fissure दिख रहा है? This is maxilla and this is the pterygoid plate. इन दोनों के बीच this is pterygomaxillary fissure. ये gap through the pterygomaxillary fissure it is entering into the pterygopalatine fossa, the third part. तो ये 3 पार्ट्स हो गए और तीनों पार्ट्स के आपके ब्रांचेस को आना चाहिए. सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस, दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी, then you have accessory meningeal artery, then you have anterior tympanic artery, then you have the deep auricular artery, and this one is inferior alveolar artery. Then second part की branches जो है 4 branches, deep temporal arteries 2 होते हैं. फिर उसके बाद आ जाएगा आपके pterygoid branches which will supply the lateral pterygoid and the medial pterygoid. Then you have the buccal branch which will supply the buccinator muscle. Then you have the mesenteric artery which will supply the masseter muscle. नीचे की तरफ यहाँ पे मेसेटर है तो ये उतर के आएगी अंदर ही अंदर और ये मेसेटर को सप्लाई करेगी. Then from the third part you are seeing all these branches. So 6 branches from the third part. So I have already explained in details. So this is the picture of the third part branches. तो ये है आपकी पूरी आर्टरी की ब्रांच और relation with lateral pterygoid and how it is entering through the pterygopalatine fossa, pterygomaxillary fissure into the pterygopalatine fossa. Then this artery is closely related to the mandibular nerve. You can see this nerve. So this nerve is mandibular nerve. So ultimately the 3 parts जो हम पढ़ रहे थे, the first part is known as the mandibular part, second part is known as the pterygoid part because it crosses the lateral pterygoid muscle, the lower head, and the third part is known as the pterygopalatine part. Third part is known as the pterygopalatine part because it enters into the pterygopalatine fossa. First part को mandibular part इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये neck of mandible के ठीक medially रहता है. ठीक है? So the 3 parts are named as the mandibular part, the pterygoid part, and the pterygopalatine part. Then you have a plexus of veins in the infratemporal fossa. So this plexus is known as pterygoid venous plexus. Pterygoid venous plexus. So this is a plexus which is present around the lateral pterygoid muscle. Lateral pterygoid muscle. So this plexus drains into the maxillary vein, which ultimately drains into the superficial temporal vein and then into the superficial temporal vein and maxillary vein joins to form the retromandibular vein. Then this plexus, pterygoid venous plexus, it communicates with the inferior ophthalmic vein. So this is inferior ophthalmic vein. ये eyeball है. So ये जो vein दिख रहा है, this is inferior ophthalmic vein. इसकी communications क्या क्या है? It communicates with the inferior ophthalmic vein. Then it communicates with the cavernous sinus. Then it communicates with the facial vein through the deep facial vein. So ये जो vein दिख रही है यहाँ पे deep facial vein, through deep facial vein pterygoid plexus communicates with the facial vein. So these are the 3 communications which is important. So what is pterygoid venous plexus? It is a venous plexus present within the lateral pterygoid muscle, within and around the lateral pterygoid muscle. So thank you. अगर आपको कोई भी डाउट हो please ask me. You need to know the course of the artery, the branches of the artery, at least the names of the branches if you, और important branches को मैंने elaborate कर ही दिया है. You need to know the middle meningeal artery, the accessory meningeal artery, the inferior alveolar artery. Okay, so these are the main important branches जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए. So this finishes your class on maxillary artery.